This chapter is a continuation of uh, the video series for the chapter uh, radioactivity, or इस lecture में I'll try to cover these topics. One is nuclear transmutation, and uh, we will talk in detail about the types of radiations emissions that occurs and how it affects the respective nuclei. और फिर हम बात करेंगे हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ एटम की क्या होती है, एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट, वी विल डू सम कैलकुलेशंस and by taking reference of an example. So first of all, nuclear transmutation. Nuclear is the term means it's related to nucleus. Transmute means to change. So transmutation word निकला है transmute से, which means change. अब न्यूक्लियर चेंजेस जिस तरह मैंने बात की थी, किस तरह की न्यूक्लियस में आती है, जो अनस्टेबल हो, और when it is unstable it emit radiations, और जब वो रेडिएशन emit करती है तो it gets more stability, and that is the a general law of life के जो भी unstable होता है it tries to get stability. Whenever water is flowing, it will try to uh, move to a stable zone or a lower height to get more stable, because the higher it is from the surface, the more unstable it is. Anyways, so न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में क्या होगा कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस, it will undergo some nuclear reaction and it will convert into a daughter nuclei, and finally it will emit some radiations. And these radiations, as I discussed before, it can be alpha, beta, gamma, or it can be also some type of energy. So it can be energy. Let me correct this. It is E, not F. Okay, so based on the type of radiations, we have three different types of radiation, and I'll try to explain in detail how this reaction occurs. The first is alpha decay. Alpha decay तब होगा जब एक न्यूक्लियस अल्फा रेडिएशन emit करेगा. एज आई डिस्कस्ड, अल्फा रेडिएशन इज ए हीलियम न्यूक्लियस और इस पे +2 चार्ज होता है. सो मैथमेटिकली अगर एक न्यूक्लियस मेरे पास है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A, it is a result of nuclear transmutation with alpha decay. Its atomic number will change by 2 and its mass number will change by 4. It will decrease and it will emit alpha particle. So alpha particle का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और मास नंबर 4 होता है. अगर बोथ साइड पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ऐड इक्वलाइज करें, सो वी विल गेट equal on both sides of the reaction. So which means that the mass is conserved. Similarly, it will also emit some energy that will be because of the nuclear transmutation, and this energy can be detected in form of heat or maybe light or in some other forms. एक एग्जांपल है यूरेनियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 238, और नाउ वी कैन सी दैट इट्स proton to neutron ratio is very less because it has large number of neutrons than protons.
और हमने पहले बात की थी कि जिसका ये रेशो कम हो इट विल इमिट अल्फा पार्टिकल. सो इट विल कन्वर्ट इनटू थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है और मास नंबर 234 होता है. Again, we can see here that the nucleus atomic number changes from 92 to 90 and its mass number from 238 to 234. Similarly, we have this other reaction which you can have a look at and uh, see the similar pattern in the reaction. Now coming to the beta decay, beta is a radiation. It's similar to electron. इसका मास इज़ द सेम इज़ इलेक्ट्रॉन और इस पे -1 चार्ज होता है. और मैंने बात की थी कि बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है तो व्हाट हैपन्स इज़ a neutron converts into proton and produces a beta particle. सो मैंने जिस तरह बताया था कि उसका एटॉमिक नंबर सिंस न्यूट्रॉन increases changes to proton, so its atomic number of protons will increase by 1 and its mass number will remain the same because the sum of protons and neutrons will stay constant, and this is its charge uh, of the beta particle. And again, अगर हम मास कंजर्व करना चाहते हैं मास भी कंजर्व हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन चार्ज भी कंजर्व हो जाएगा. सो नथिंग इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन. एक कॉमन एग्जांपल है कार्बन 12 की. व्हेन इट अंडरगोज अ बीटा डीके, इसका मास नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है 6 से 7 पे चला जाता है और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है. Sorry, just I wanted to make a correction. It's not carbon 12, it is carbon 14. Because carbon 14 में प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो ज़्यादा है, so it undergoes beta decay. Anyways, now coming towards gamma decay. जिस तरह gamma decay is, it's gamma is a form of energy. It doesn't occupy space and neither it has mass. So as a result of gamma decay, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा और मास नंबर भी सेम रहेगा. और it occurs when a nucleus is under an excited state. It means that the star here shows that the nucleus is under excited state. And this nucleus is not excited. It means that when nucleus has more energy, it undergoes excited state and then it emit a gamma particle and it goes more stable. It is lower energy. अब जिस तरह हमने एक न्यूक्लियस के सिंगल न्यूक्लियस के लेवल पे बात की थी कि एक न्यूक्लियस रेडिएशन इमिट करता है. नॉर्मली अगर हमारे पास कोई सैंपल हो एटम का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सैंपल है एटम्स का, maybe it's uranium, it can be polonium or any other element. So इसमें छोटे छोटे atoms होंगे, rather it should be much smaller. So very small atomic particles. और छोटे से वॉल्यूम में we can expect large amount of atoms. तो होगा क्या कि at a time सारे atoms it can emit radiations and इस सैंपल ने जो रेडिएशंस इमिट करने हैं वो भी एक नहीं होगा, इट कैन बी अ लॉट. सो नंबर ऑफ डीकेज
कितने नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस और ट्रांसम्यूटेशंस एक सेकंड में हो रही है, इसको हम कहते हैं एक्टिविटी. It's a term, it's a scientific term, we call it activity. So this is how we define activity. It is the number of disintegrations per second or number of emissions per second. इसके दो यूनिट्स हैं. वन इज़ क्यूरी, based on the scientist Curie, and 1 Curie is 3 into 10 power 10 decays per second. Another unit है becquerel. It's much smaller unit. Becquerel is 1 decay per second, so it's a very very smaller unit. Normally अगर कोई हम सैंपल लेते हैं तो that is a more realistic and reasonable unit of decay. Anyways, so this is how the decay of or the activity of a radioactive substance is measured. And we have two different units, one is bigger and one is smaller. Now coming back to the last topic, which is the half-life of the element. It is represented by t 1 by 2. 1 by 2 is half, t means time. So life is also measured in time. So this is it's a representation, mathematical representation. What is actually half life? जिस तरह मैंने एक सैम्पल की बात की थी कि इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 न्यूक्लियाई हैं और एटम्स. अब 10 सेकंड बाद और फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइम होगा जिसको मैं कहूँगा हाफ लाइफ. ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इनमें से 50 जो है दे विल अंडरगो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन and 50 will still be radioactive. It means that in half time, in half life, under one half life, मेरे पास half of the radioactive elements they have transmuted and they have emitted alpha particles, or half of them are still left and they can still undergo a nuclear transmutations. So जितने टाइम में ये प्रोसेस हो कि नंबर ऑफ एटम्स हाफ हो जाए या नंबर ऑफ रेडिएक्टिव एटम्स हाफ हो जाए, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ. एंड इंटरेस्टिंगली दैट इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पर्टिकुलर न्यूक्लियस. कोई भी न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है. इसका ये जो हाफ लाइफ होगा इट विल बी कांस्टेंट and it ranges from seconds to years based on the type of atoms. For example, radium की half life है 1600 years, which means that its activity is very low. अब अगर मैं एक चार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ जिसमें एक्स एक्सिस पे मेरे पास नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं और वाई एक्सिस पे मेरे पास कितना सब्सटेंस रह गया है, परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ लेफ्ट. सो इनिशियली ज़ीरो हाफ लाइफ है, मेरे पास 100% रेडिएक्टिव सब्सटेंस है. तो जो जो टाइम गुजरता जाएगा आफ्टर हाफ लाइफ 50% will be left and under next half life 50 का भी आधा हो जाएगा, 25% will be left
एंड अंडर नेक्स्ट हाफ लाइफ 50 का भी 25 का भी हाफ हो जाएगा, इट विल बी 12.5, और देन इसका भी हाफ हो जाएगा. सो इनिशियली हम देख रहे हैं कि सब्सटेंस बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है, और जितना कम होता जाता है उतना वो स्लोली कम होता जाता है. सो दिस इज़ हाउ रेडियोएक्टिविटी अकर्स. अगर मैं टेबल पे लिखूं कि एक रो में, एक कॉलम में मेरे पास नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हो, कितने हाफ लाइफ गुजर गए हैं, और दूसरे में हो कि जो रेडिएक्टिव सब्सटेंस है वो कितना रह गया. सो लेट सपोज इनिशियली जब टाइम नहीं गुजरा, मेरे पास इन नॉट है सब्सटेंस, दैट इज द नंबर ऑफ रेडिएक्टिव एलिमेंट्स. एक हाफ लाइफ के बाद वी विल गेट इन नॉट बाई 2, half of the substance, radioactive substance. Note that we are talking about the radioactive substance that is left. 2 हाफ लाइफ के बाद उसका भी हाफ हो जाएगा, 3 के बाद उसका भी हाफ हो जाएगा. और इसमें आप एक पैटर्न देख रहे हैं. 0 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 power 0, बिकॉज 1/2 power 0 इज़ 1, सो 1 एंड नॉट. दिस इज़ 1 हाफ लाइफ गुजरा है तो 1/2 power 1, 2 गुजरा है तो पावर 2, 3 गुजरा है तो पावर 3. इन जनरल अगर n हाफ लाइफ गुजरे हो तो पावर n आएगा. और यहाँ पे स्मॉल n जो है, it is the total number of half lives passed, and not is the total amount of substance that were number of radioactive elements that were present before the activity. n हमें कैसे पता चलेगा? n is the number of half lives. अगर हमें पता चले कि टोटल टाइम कितना पास्ट हुआ है, उसको हम हाफ लाइफ से डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल हाफ लाइफ्स आ जाएंगी. इसको मज़ीद समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल से, जिससे हमारी जो है बड़ी क्लियर हो जाएगी कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम बाद एक सैंपल कितना रह जाएगा. सो वी हैव 160 microgram. So it's a very less amount of substance of polonium. So हमारे पास इतना मास रह गया है, मास है उसका. और हमें पता है कि पोलोनियम जो है इट डिकेज विद अल्फ़ा एमिशन, और उसकी हाफ लाइफ जो है वो है 3 मिनट. और क्वेश्चन ये है हाउ मच इज लेफ्ट आफ्टर 9 मिनट. सो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है. हमारे पास है डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 9 मिनट, टी हाफ जो है वो हमारे पास है 3 मिनट, और एन नॉट यहाँ पे हम मास में ले रहे हैं, दैट इज़ 160.0 माइक्रोग्राम. तो पहले तरीका हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आ जाएंगे. सो यूजिंग दिस फार्मूला नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना पास हुआ है डिवाइडेड बाय टी हाफ. टोटल टाइम पास हुआ है 9 मिनट, और हाफ लाइफ है 3 मिनट. मिनट कैंसिल हो जाएंगे तो 3
half lives पास्ट में. नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स लिफ्ट कितने हो गए. सो n is equal to 1 by 2 power n into n naught. ठीक है, ये these are the number of atoms left या mass left. This is initial mass. So putting the values in the equation, we get n is equal to 1 by 2 power number of half-lives 3 into n naught is equal to 160, and then it's microgram. Putting the values, we will get 20 microgram. So it means कि 9 मिनट के अंदर अंदर ये कन्वर्ट हो गया 160 माइक्रोग्राम से 20 माइक्रोग्राम. Now we are talking about the radioactive substance. We still have 140 microgram of substance of polonium that is stable, yeah, not radioactive. So this is all from today's lecture. I hope I have cleared all the basic concepts. See you in the next lecture. Bye.